Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to the course of Development Planning and Administration, MPA 403, and now the lecture is 24, and I'm your facilitator, Professor Dr. Muhammad Majid Mahmood Bagram. So let's have a brief reflection of our previous lecture. Okay, in our previous lecture, we have talked about compensation management and how compensation management, how compensation policy is really very important for planners. So जब हम बात करते हैं development planning की, compensation has a very important role here, because the most important asset of any organization is human resource. Human resource means all the employees who are working for the organization at any level. So the best organizations, they are always, trying their best level to motivate their employees, to retain their employees. So in order to motivate and retain your employees, you need to give them the best compensation. So when we talk about compensation, there are two types of compensation: financial and non-financial. So the money, the capital is called the financial compensation, whereas your appreciation, your moral encouragements, training and development, they are called the non-financial compensation. So what is required in an organization to compete in the market? Creativity and innovation. So employees, they do their best. They are willing to unlock their potential if they are satisfied. And strong compensation, of course, gives them the inner and outer satisfaction. According to research, in the long run, non-financial rewards are more important than financial rewards. So the best organizations, they not only focus on the financial rewards, they also strengthen more, and they focus more on strengthening the non-financial rewards, like taking medical care of their employees, things like that. So let us move on towards our today's topic of discussion, and that is motivational leadership. So about leadership, one of the most observed and least understood phenomena on earth is called leadership, said by James McGregor Burns, political scientist. लीडरशिप की बहुत उसको ऑब्जर्व किया जाता है, बहुत बुक्स अवेलेबल हैं, बहुत कुछ लिखा जा चुका है, but still it is least understood phenomena on earth. So you see the pictures of Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and then of course you see the picture of Abdul Sattar Eidi. Now this is the most wonderful definition of leadership according to John Quincy Adams. Now I want your complete attention here. Now how you know that you are a leader? So you read it, and then you will see that where you stand. If your actions inspire others to dream more, learn more, do more, and become more, you are a leader. Now this is really very important, that your actions should positively influence others to dream more. Your actions helping others to learn more, your actions are motivating others to do more, and your actions are helping others to become more. And if this is the case, you are definitely
a wonderful leader, according to John Quincy Adams. So leadership is the influencing process of leaders and followers to achieve organizational objectives through change. So let us discuss this. Workforce management की जब हम बात करते हैं, so management is more than getting work done through people. It is developing people through work. If you want to improve your workforce management, then you need to improve the way you lead people. Very important. Now management is, administration is to get the best out of people. And how this is possible? This is possible the way you lead people. So if you lead people in the right manner, you can unlock their potential and you can bring out the best out of your people. You can fully utilize their potential, skills, experiences, creativity. And your people, your employees can move towards creativity and innovation. And that is required in order to compete in today's market. Now talking about leadership, so leadership is constantly changing and survivors learn to change with it. Yesterday, natural resources defined power. Today, knowledge is power. So जब हम past की बात करते हैं, तो natural resources define power. कि किसके पास कितने natural resources हैं. आज जब हम present की बात करते हैं, knowledge is the power. तो जिसके पास जितनी knowledge है, वो उतना powerful है. Yesterday leaders commanded and controlled. Today leaders empower and coach. जब हम पुराने leaders की बात करते हैं, पुराने हम देखते हैं कि command and control हमें नजर आता है कि जिन लोगों ने बहुत command की और बहुत ज़्यादा लोगों को control किया, they were called the leaders. But now, at present, leaders, they delegate and they coach, they facilitate, they motivate. So leader वो नहीं है जो तमाम अख्तियारात अपने पास रखे. Leader वो नहीं है जो तमाम decisions खुद करे. An ideal leader is a person who delegates tasks to his or her subordinates and provides coaching, guidance, motivation to followers. Yesterday, leaders were warriors. Today, they are facilitators. And finally, yesterday, leaders directed. Today, leaders delegate. You know, they delegate their power, they delegate their authority. So in this way, today, leaders, they value their followers. They trust their followers. They believe on them. And of course, in return, the followers, they are doing their best. So this all said by Dr. Dennis Waitley in Toastmasters Series 2011. Now talking about leadership, it is the ability to influence a group toward the achievement of goals. Of course, you influence, you motivate. So it is the ability not everybody has. So it is the convincing ability, it is the influencing ability in the positive sense. So you positively influence a person towards achievement of goals. It requires a leader and followers. Of course, whenever you talk about leaders, they have followers. And if you have no followers, you're not a leader. So different from management. So अक्सर लोग इसको mix करते हैं leadership को और management को कि who are leaders and who are managers. So let's focus on the difference here. So in leadership, doing the right things. Management is doing things right. Okay, what is the difference here? Okay, leadership, doing the right things. So they are proactive. From the beginning, they are moving in the right direction.
Whereas in case of managers or management, doing things right, they are reactive. People who are, correcting their mistakes. But leaders, they are inputting the best. They are trying not to make any mistakes. So leadership is about influence. The process of influencing others to understand and agree about what needs to be done and how to do it. And the process of facilitating individual and collective efforts to accomplish shared objectives according to UC 2006. So leadership occurs anywhere. You can see these pictures. Now talking about leader effectiveness, what results would we expect to see from a good leader? Let us discuss those results. The first thing is performance. The job gets done. Employees, they are given certain tasks to perform, different activities to perform. So leaders, they focus on this area that whatever the job is given to you, whatever the responsibilities the followers have, it gets done. First thing. Then motivation. Followers are energized. The ideal leaders, they are doing their best to motivate their followers. And with right motivation, you can achieve the impossible, because the impossible itself says that I am possible. So in order to motivate your employees, leaders, they take initiative, they facilitate, they encourage, they become a role model. So with the right motivation and with the right actions, organization is able to beat their competitors. Efforts, followers try hard. Here I will add one more thing, that hard work and smart work. So followers, they are doing the best. And then satisfaction, followers are really very happy. They are satisfied and they want to stay with the organization. They become high loyal with the organization. So these are the results we expect to see from an ideal leader. Now talking about the leadership trends. Technology is bringing a change in leadership styles. Of course, the way you lead people now is different the way people lead people in the past. Technology is bringing changes in the leadership styles. The command and control leadership methods of the last century are extremely inefficient in the fast changing technology world. Command and control ka door khatam ho chuka. Now we talk about the technology. We talk about the motivation. So जो लोग कमांड एंड कंट्रोल करके लोगों को अपनी बात मनवाना चाहते हैं, वो दौर बिल्कुल ख़त्म हो चुका. Now the world is totally changed. Motivating environments are needed. Really very important. I always say one thing, that I cannot motivate people. So what I can do is, I should design a motivating environment. And once we develop that motivating environment in our organization, people will get motivated automatically. So this is really very important, that you need to create that motivating environment in your office. And how you do that? For example, people, employees, they should, give other person a helping hand.
You know, your colleagues, your juniors and seniors, you know, sometimes they need your help. So become their helping hand. And then you can have get-togethers, you know, social gatherings, family get-togethers, things like that. You know, so इस तरह के गेट टुगेदर से डेफिनेटली जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, उसको बेहतर तरह से मैनेज किया जा सकता है. एंड देन ऑफ कोर्स सपोर्टिव एनवायरनमेंट के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, यू नो, व्हेन पीपल गो फॉर ट्रेनिंग्स, तो अक्सर डेवलपिंग कंट्रीज में, लाइक पाकिस्तान में ये देखा गया कि जब एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग अटेंड करके वापस आते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है और कुछ एम्प्लॉयज़ आपके गए और वो ट्रेनिंग अटेंड करके वापस आए, तो मोस्टली ये ऑब्जर्व किया गया, पर्टिकुलरली इन पब्लिक सेक्टर ऑफ पाकिस्तान, कि उन एम्प्लॉयज़ को वार्मली वेलकम नहीं किया जाता इन मोस्ट केसेस. लाइक फॉर एग्जांपल अक्सर ये एक नेगेटिव परसेप्शन होती है कि एम्प्लॉयज़ जो हैं शायद वो अपने पर्सनल गेन्स के लिए ट्रेनिंग पे गए, या वो सिर्फ वहाँ सैर सपाटे के लिए गए, वगैरह वगैरह, इस तरह की बात की जाती है. तो होना तो ये चाहिए कि जो एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ करके आए हैं उनको आप वार्मली वेलकम करें, उनके ऑनर में आप एक गेट टुगेदर अरेंज करें, आप उनसे एक फीडबैक लें कि उन्होंने ट्रेनिंग में क्या सीखा, और ये भी आप कोशिश कर सकते हैं कि उन एम्प्लॉयज़ को एक आप रिक्वेस्ट करें कि वो जो ट्रेनिंग हासिल करके आए हैं वो उसकी कुछ लाइक ब्रीफली वही चीज़ें अपने एम्प्लॉयज़ के साथ शेयर करें, फॉर्मली या इनफॉर्मली. तो उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ जो ट्रेनिंग करके वापस आ रहे हैं, दे विल बी हाईली मोटिवेटेड जब उनको वार्मली वेलकम किया जाएगा, और वो फिर वाकई कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने ट्रेनिंग में सीखा, जो उनकी लर्निंग हुई, जो उनकी स्किल्स डेवलप हुई, स्ट्रेंथन हुई, उस लर्निंग को, उस स्किल इन्हांसमेंट को वो अपनी प्रेजेंट जॉब में अप्लाई करेंगे. लेकिन हमारे यहाँ पब्लिक सेक्टर में अक्सर ये देखा गया कि जब आप एम्प्लॉयज़ को डिस्करेज कर देते हैं, तो बजाय ये कि वो ट्रेनिंग से वापस आने के बाद उसको अप्लाई करें अपनी लर्निंग को, वो पहले वाले काम जैसे वो पहले से काम कर रहे हैं, रूटीन वर्क वही करना शुरू कर देते हैं. सो इससे एक तो ये हुआ कि एम्प्लॉयज़ के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन की एक कॉस्ट आई. उसके अलावा एम्प्लॉयज़ जब वहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से ऑफ द जॉब गया, तो उसने एक ऑफ कोर्स वहाँ से वो एक उसकी एब्सेंस है, और उसकी एब्सेंस में बहुत सा काम जो है वो दूसरे लोगों को करना पड़ा, या वो काम पेंडिंग मौजूद है. तो आपको ट्रेनिंग का बेनिफिट होने की बजाय आपको नुकसान हो गया. तो पूरी दुनिया में जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग्स की, तो ट्रेनिंग्स आर हाईली रिकमेंडेड, लेकिन ट्रेनिंग अलोन कैन नॉट इटसेल्फ इनफ. ट्रेनिंग के बेनिफिट्स तभी मुमकिन हैं जब आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एक हाईली मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट्स देंगे अपने एम्प्लॉयज़ को. तो जब आपने अपने कॉलीग के ऑनर में उसको वार्मली वेलकम किया, उसको एक अरेंज किया गेट टुगेदर, और उसको कहा कि वो शेयर करे कि उसने क्या क्या सीखा है, तो जब आप खुद जाएंगे ट्रेनिंग पे, तो डेफिनेटली आपने भी तो वापस आना है उसी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग के बाद, तो आपको भी इंशाल्लाह वैसे ही वार्मली वेलकम किया जाएगा जिस तरह के आपने अपने कोलीग को पास्ट में किया था. सो दिस इज अ साइकिल. सो आई एडवाइज ऑल ऑफ यू हु आर वर्किंग कि हमें एक दूसरे की सक्सेसेस को सेलिब्रेट करना है, और जो फेलियर्स हैं उसमें एक दूसरे को हमने हेल्प आउट करना है ताकि डीमोटिवेशन ना हो. तो ऑर्गेनाइजेशंस जिनके अंदर एक हाईली मोटिवेटिंग एनवायरनमेंट होता है, वहां पे एम्प्लॉयज अपना डिस्क्रिशनरी बिहेवियर जो है उसको एक्सरसाइज करते हैं. नॉट डिस्क्रिशनरी बिहेवियर ये होता है कि एम्प्लॉयज दे टेक एन एडिशनल स्टेप. लाइक फॉर एग्जांपल आपके एम्प्लॉयर ने आपको, फॉर एग्जांपल आपके वर्किंग आवर्स हैं 9 to 5 PM, सो 9 AM to 5 PM आपके 8 आवर्स वर्किंग है. 3 बजे 3 PM पे आपका काम कंप्लीट हो जाता है. नाउ यू आर फ्री. तो अब आप क्या करेंगे? एम्प्लॉयर जारी बात है आपके साथ नहीं बैठा, वो अपने कमरे में काम कर रहा है, तो यू हैव 2 or more आवर्स फ्री. अब क्या करेंगे?
So employees having that discretionary behavior, employees who are really loyal with the organization, what they do, they try to improve the quality of their work. They go for additional tasks. They move towards creativity and innovation. So having a motivating environment can give you wonderful, wonderful results. And this is the responsibility of a good leader. So paradigm has shifted from management to leadership. Now let us discuss the differences between managers and leaders. Now managers are rational, problem solving, and they control. They react and respond, interact rationally with other people. Whereas leaders define problems, vision, having a wonderful vision, proactive, emotional relationship with other people. So now you see that on one side, managers who are reactive. On the other side, there are leaders who are proactive. Now reactive is people who do something in response, and proactive is people who plan in advance. Now proactive persons are the real leaders. Then when you are dealing with your colleagues, your employees, only rationally, that is what managers do. But leaders, they not only have a very friendly attitude and behavior with their employees, they try to understand the feelings of their followers. And I always say one thing, that the real meanings of words are not in words. The real meanings of words are in the relationships. तो जितना ज़्यादा आप रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके वर्ड्स के मीनिंग्स उतने स्ट्रॉन्ग होंगे. और जितना ज़्यादा आप अपने रिलेशनशिप्स को वीक करेंगे, उतने ही आपके वर्ड्स के मीनिंग्स वीक होते जाएंगे. सो जब लीडर्स कम्युनिकेट करते हैं अपने फॉलोअर्स के साथ, तो उनके फॉलोअर्स उनके वर्ड्स को बहुत स्ट्रांगली इंटरप्रेट कर रहे होते हैं. On the other side, when the managers are communicating with their colleagues or their subordinates, so when they are not taking care of the feelings, so that creates problem in the organization. So which leadership style needed? Let's talk about the different leadership styles. And the first style we are going to discuss is the coercive leadership. Now in this, leader wants things to be done. Now these are the people who wants things to be done in any case, irrespective of your feelings, irrespective of your problems, irrespective of your sickness, irrespective of your any other factor. They are only and only interested that things to be done. और अगर आप टाइम पे काम मुकम्मल नहीं कर सकते, तो you are in big trouble. The atmosphere he creates may not be the friendliest. Of course, एक unfriendly किस्म का atmosphere है, क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि आप you're working like as a robot. And then जो environment है, जो atmosphere है, वो unfriendly है. Work goes as instructed. आपको कहा गया कि आपने एक काम इस तरह से करना है, तो आपने वैसे ही करना है. आपको कहा गया कि काम उस तरीके से करना है, तो आपने उसी तरीके से करना है. इंस्ट्रक्शंस को as it is आपने फॉलो करना है. तो यहां पे एक क्वेश्चन अराइज होता है कि देन वेयर इज क्रिएटिविटी, वेयर इज इनोवेशन,
What about, new methods of working? No liberty to take independent decision by employees. So employees, they are not giving importance. They are not valued. The leader, like he is not willing or he is not ready to trust his or her employees. So no decision-making authority and power is given to employees. Helps people break unsuccessful habits and make them work well. So this could be one of the benefits, that it helps the people to break away the unsuccessful habits and make them work well. This is like, of course, when we talk about any style of leadership, it has certain pros and cons, and it has certain advantages and disadvantages. So this looks like one advantage here, but when we look it as a whole, the coercive leadership style has more negative areas. Now let's move towards another style of leadership called authoritative leadership style. Now these type of leader places employee and work within the organizational goals. कि organization के जो goals हैं, तो वो employee और उसके काम को उस goals के अंदर रहते हुए उसको place करता है employee को, कि these are the boundaries and these are the goals. इन parameters के अंदर रहते हुए आपने काम करना है. This style requires careful handling to avoid criticism. Of course, जब आप बात कर रहे हैं बाउंड्रीज की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स की बात कर रहे हैं, तो वेरी केयरफुल हैंडलिंग ऑफ एम्प्लॉइज इज रिक्वायर्ड. अदरवाइज देयर विल बी अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ऑन such type of leaders who are authoritative. Now let's discuss the affiliative leadership style. Now leader creates harmony among his people. कि लीडर जो है वो कोशिश कर रहा है कि एक हार्मनी हो, लोगों के दरमियान एक एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो, एक ताउन करें एक दूसरे के साथ, हाई कोऑर्डिनेशन हो, हाई कोऑपरेशन हो, इस तरह की कोशिश कर रहा है. सो एक एफिलिएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है ये लीडर among the people, among the followers. Leaders share ideas, builds trust and communicates frequently. अच्छा, this is really very interesting कि in affiliative leadership style leader अपने ideas को share कर रहा है. Now this is really very important कि वो अपने ideas को share कर रहा है और वही ideas फिर उसके followers हैं, जो employees हैं, वो उसको मजीद उसके ऊपर comments कर रहे हैं. And of course sharing जो है two way communication चल रही है. builds trust, क्योंकि जब लीडर जो है अपने आइडियाज को अपने एम्प्लॉइज के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर कर रहा है, तो डेफिनेटली वन ऑफ द गुड रिजल्ट इज दैट बिल्ड्स ट्रस्ट. एम्प्लॉइज जो हैं वो ऐसे लीडर पे ज्यादा ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं एंड कम्युनिकेट्स फ्रीक्वेंटली. और जो एफिलिएटिव लीडर है ये इसका बहुत फोकस होता है कम्युनिकेट लाइक बहुत प्रोएक्टिव है, कम्युनिकेट करता है, फ्रीक्वेंटली कम्युनिकेट करता है. और जब भी इस लीडर को मौका मिलता है वो एम्प्लॉइज के साथ बैठ जाता है, उनके साथ अपने आइडियाज को शेयर करता है, उनके साथ कम्युनिकेट करता है, उनकी प्रॉब्लम्स को लिसन करता है, थिंग्स लाइक दैट. लुक्स एट पीपल एज प्रेशियस रिसोर्स. दिस इज रियली वंडरफुल. जैसे हम कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. सो एफिलिएटिव लीडर जो है इट लुक्स एट द एम्प्लॉइज एज प्रेशियस रिसोर्स. सो गिविंग a lot of respect, value and trusting employees, things like that.
और in return, of course, employees, they are highly motivated and they become more loyal with the organization. Employee driven and motivating. ओवरऑल जब हम बात करते हैं एफिलिएटिव लीडरशिप स्टाइल की, तो ये एम्प्लॉय ड्रिवन है और हाईली मोटिवेटिंग है कि द बेसिक फोकस ऑफ एफिलिएटिव लीडरशिप स्टाइल इज एम्प्लॉय ड्रिवन. सो एम्प्लॉय के ऊपर फोकस कर रहा है, उसकी मोटिवेशन के ऊपर फोकस कर रहा है एज ए होल. अनदर लीडरशिप स्टाइल इज कॉल्ड डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. इट सेज दैट build atmosphere of trust and respect. ये वो लीडर्स हैं जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट को बिल्ड करते हैं. और यहां मैं एक बात जरूर शेयर करता चलूं कि आपकी उतनी ही इज्जत होती है दूसरों के सामने जितनी आप अपनी इज्जत खुद करते हैं. तो ये वो लीडर्स हैं जो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं रिस्पेक्ट का और ट्रस्ट का. लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये जो बात कहते हैं उस पर अमल भी करते हैं, जो प्रॉमिस करते हैं उसको कीप करते हैं और अपने एम्प्लॉयज को सपोर्ट करते हैं. मेरिट के ऊपर डिसीजंस करते हैं. इनकी जो डिसीजन मेकिंग है दैट इज हाईली ट्रांसपेरेंट. अकाउंटेबिलिटी इज आल्सो देयर. रोल क्लैरिटी इज आल्सो देयर. सो एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई विल से हियर दिस that respect factor. Because किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप एम्प्लॉयज की डिसरिस्पेक्ट करेंगे, आप उनको ऑनर नहीं देंगे, अगर आप उनका ट्रस्ट ब्रेक करेंगे, तो देन यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि एम्प्लॉयज जो हैं इन रिटर्न वो क्या करेंगे. सो दिस इज रियली मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ डेमोक्रेटिक लीडरशिप. देन employees morale is high and they know what to expect. Employee का morale बहुत high है and they know that what to expect. They are well informed and participate in decision making. अच्छा, चूंकि ट्रस्ट और रिस्पेक्ट का एक एटमॉस्फेयर है, सो दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, क्योंकि लीडर ने उनके साथ अपना तमाम जो आइडियाज को, अपने विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स को शेयर किया हुआ है. सो दे आर वेल इन्फॉर्म्ड, जो एम्प्लॉयज की हम बात कर रहे हैं, एंड दे पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. तो लीडर अकेला डिसीजन नहीं ले रहा, जो एम्प्लॉयज हैं दे आर ऑल्सो इन्वॉल्व एंड दे पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग विद द लीडर. टीम जनरेट आइडियाज. ऑफ कोर्स it is not an individual who is responsible to generate ideas. It is a team that generate ideas. जैसे हम बात करते हैं कि whole is greater than the sum. तो 1 और 1 11 की जब हम बात करते हैं तो डेफिनेटली जब एज ए टीम आप आइडियाज जनरेट करेंगे तो देयर विल बी वंडरफुल ब्रेनस्टॉर्मिंग. सो people sit together as a team, they have a wonderful environment of trust and respect. They, they participate in decision making. So when they have all of these things, of course, their creativity and innovation is really on the top level. There will be time consuming meetings. अच्छा, इसका यहाँ पे इसके ऊपर क्रिटिसाइज किया गया कि बहुत जो मीटिंग्स आपकी होंगी वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होंगी, क्योंकि आप जो लीडर है वो तमाम एम्प्लॉयज को इक्वल एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है पार्टिसिपेट करने की, और एम्प्लॉयज भी ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं. सो जब भी मीटिंग्स होती हैं एम्प्लॉयज की पार्टिसिपेशन बहुत हाई लेवल पे है, और जब इतनी ज्यादा पार्टिसिपेशन होगी एम्प्लॉयज की कि एवरी एम्प्लॉय जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपने आइडियाज देना चाह रहा है, तो इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग. एवरीवन कैन नॉट बी सेटिस्फाइड. नाउ दिस इज अनदर criticism on this democratic leadership style is that every employee cannot be satisfied. Of course, आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो तमाम एम्प्लॉयज एग्री हों एक ही डिसीजन पे. दिस लुक्स रियली वेरी हार्ड.
सो जब आप तमाम लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर सकेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स आएंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, एंड दैट कैन क्रिएट प्रॉब्लम्स. अनदर leadership style is called pace setting leadership. Now it says that these type of leader does things fast and does them good. अच्छा, जब हम पेस सेटिंग की बात कर रहे हैं, ये वो लीडर है जो कहता है कि एक फास्ट काम होना चाहिए और अच्छी तरह काम होना चाहिए. So they give the time limits, they set the time boundaries, and then they set the tough targets, and then time frames are there, and employees, they are motivated to achieve their desired goals within those predetermined time frames. Identifies poor performers and call for better results. Now this type of leader is really very good in identifying the poor performers और उनको better results के लिए motivate करता है. Like for example, by sending them for trainings, by sending them for refresher courses, on the job, off the job trainings जो है उनकी conduct की जाती हैं poor performers की, और root causes को identify किया जाता है कि poor performers की root causes क्या हैं, और pace setting leader जो है वो उन root causes को फोकस करके इन पुअर परफॉर्मर्स को कन्वर्ट करता है गुड परफॉर्मर्स में. वर्क्स वेल विद टीम्स लैगिंग बिहाइंड, डीमोटिवेटेड और विदाउट कमिटमेंट. सो दिस टाइप ऑफ लीडरशिप जो है, इसमें पेस सेटिंग लीडरशिप में जब जो टीम्स जो पीछे रह जाती हैं, जो डीमोटिवेटेड हैं, या जहां पे कमिटमेंट लैक कर रही है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वहां पे pace setting leadership style is highly recommended. Another leadership style is called coaching leadership. Identify strengths and weaknesses of the teams and help them grow. Now this is like doing that analysis, like what are your strengths, what are your weaknesses, and then taking corrective measures, taking those steps to overcome your areas for improvement. Delegates extensively to convert employee into leaders. This is really wonderful. So ये वो leader है जो सिर्फ ये नहीं चाहता कि वो best perform करे, ये एक step आगे की बात कर रहा है कि ये अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि employees को उनको लाया जाए, उनको बनाया जाए एज ए लीडर. सो कन्वर्ट करने की बात करता है एम्प्लॉइज इनटू लीडर्स. तो उसके लिए वो डेलीगेट करता है डिफरेंट टास्क को, अपनी पावर्स को, अपनी अथॉरिटी को. तो एम्प्लॉइज व्हेन दे आर टेकिंग द इनिशिएटिव्स ऑन देयर ओन, व्हेन दे आर हैविंग दैट अथॉरिटी एंड डिसीजन मेकिंग पावर, तो उनके अंदर एक लीडरशिप स्किल्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं. Useful when employees are aware of their strengths and develop their leadership. So it is useful when employees, they have a knowledge about their strengths. So this is one of the good leadership styles. Now we talk about transformational leadership. It says the process whereby an individual engaged with others and creates a connection that raises the level of motivation and morality in both the leaders and followers. Now what are the major characteristics of transformational leadership? According to Ron Riggio, he defines the characteristics as charismatic, visionary leaders who transform organizations through empowering followers, leaders who bring out the best in followers and develop them into leaders, and then leaders who motivate and challenge teams to perform at levels beyond expectations. Now this is really wonderful, this transformational leadership style. Like
they are not only empowering their followers, they are also trying to unlock the potential of their followers. And they do this thing with the help of extreme motivation. And they enable their employees to do something which is beyond the expectation levels. So this leader is really charismatic, visionary. Talking about new roles of a creative leader, be a coach rather than a commander. आप लोगों को command करना छोड़ दें. You need to be a coach, you need to be a guide, you need to be a counselor, you need to be, a person who becomes a role model. Be a mentor and not a manager. Be a delegator in the place of a director. आप delegate करें बजाय ये कि आप director बन जाएं और आप instructions दें. Delegate your authority, delegate your task. Let the employees decide. Be one who facilitates self-respect rather than one demand respect. Self-respect को focus किया जाता है बजाय ये कि respect को आप demand करें कि आप मेरी इज्जत करें. इसकी बजाय self-respect को facilitate किया जाता है कि आपके actions लोगों को मोटिवेट करें कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें. जैसे कि मैंने पहले बात की कि आपकी उतनी ही इज्जत होती है दूसरों के सामने कि जितनी कि आप अपनी खुद इज्जत करते हैं. तो जो लोग अपनी जितनी ज्यादा इज्जत करते हैं वो उतना ही सोच समझ के बात करते हैं. जब तक वर्ड्स आपके मुंह में हैं, यू कंट्रोल वर्ड्स. लेकिन जब वर्ड्स आप डिलीवर कर देते हैं, you are in control of words. तो जो लोग who are really the good leaders, जब वो बात करते हैं तो बहुत सोच समझ के बात करते हैं, and this gives them a big high respect in their organizations. So which leadership style is needed? There is no one best style of leadership. Successful leaders are said to be able to adopt their leadership style to meet subordinates' needs and particular situation, according to Davenport 1998. So, जब हम कहते हैं कि सबसे बेहतर leadership style कौन सा है, तो उसके बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि जी ओके ये leadership style अच्छा है या वो leadership style अच्छा है. Successful leaders वो होते हैं जो according to situation, according to needs and wants of their employees and followers, वो उन situations को adopt करते हैं. Now talking about effective leaders. Effective leaders should establish relationships with all members, not just a few special individuals. Now this is a big challenge, not only in developing countries. This is a big challenge in advanced countries as well. That leaders क्या करते हैं कि वो sometime what happens that they need to treat all employees equally. Leader relationships are not limited to employees but include customers, suppliers and other relevant stakeholders in the broader community. So जब हम अभी challenge की बात कर रहे थे कि why leaders vary their behavior with different followers. Why leaders have different behavior with different followers. Why don't they have one positive behavior with all of their followers? So this is a big challenge, and let's discuss this. It is called Pygmalion effect. It says that it occurs when selected subordinates demonstrate loyalty, commitment, dedication, and trust, and as a result, win the liking of superiors, who subsequently give them higher performance ratings. अच्छा, this is really very interesting. आप एडवांस कंट्रीज की बात करें, आप डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, आप पाकिस्तान की बात करें,
It occurs everywhere, and it is still one of the biggest challenges we are facing in the world these days, that ये एम्प्लॉइज जो अपने लीडर्स के साथ ज्यादा लॉयल हैं एज कंपेयर टू देयर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो अपने लीडर के साथ एक एक्स्ट्रा कमिटमेंट शो कर रहे हैं। उनकी उनकी डेडिकेशन लॉयल्टी जो है वो अपने लीडर के साथ ऑर्गेनाइजेशन लॉयल्टी से ज्यादा है। लीडर अभी फॉर एग्जांपल लीडर के जो ऑफिशियल काम है, इवन जो अनऑफिशियल मैटर्स हैं, उसमें भी ये सबऑर्डिनेट्स बढ़ चढ़ के उनका काम कर रहे होते हैं। तो एज ए रिजल्ट क्या होता है कि जब लीडर परफॉर्मेंस रेटिंग्स दे रहे होते हैं कि कौन से फॉलोअर्स ने बेहतर परफॉर्म किया, कौन से फॉलोअर्स ने बेहतर परफॉर्म नहीं किया, तो पूरी दुनिया में ये फिनोमिना देखा गया कि जो लीडर्स जो सबऑर्डिनेट्स जो अपने लीडर्स के साथ बहुत एक्स्ट्रा लॉयल थे, ऑर्गेनाइजेशन से ज्यादा वो अपने लीडर्स के साथ लॉयल थे, उनकी परफॉर्मेंस रेटिंग्स लीडर्स ने हाई पे लेके गए उनको। और जो सबऑर्डिनेट्स, जो फॉलोअर्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा लॉयल थे और लीडर के साथ उतने लॉयल नहीं थे, उतने ज्यादा कमिटेड नहीं थे, ज्यादा जो कमिटमेंट थी, लॉयल्टी थी, वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ थी, उनको लीडर्स ने कम रेटिंग पे रखा। सो दिस इज कॉल्ड पिग्मेलियन इफेक्ट, एंड ऑफ कोर्स दिस इज of course a highly discouraging factor when we talk about the overall motivation of employees in an organization. When great goes bad, for leaders success and failure comes from need for total control. ये वो लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि उनको तमाम कंट्रोल जो है उनको मिल जाए। And of course when they try to go for total control of the organization, you know, that results in failure. Refusing to hear no, ये वो लीडर्स हैं जो नो सुनना ही नहीं चाहते। They refuse. So they are not giving importance to any logical comments even. Ignoring the experts. Of course, you're not the all-rounder as a leader. You need to ask experts in certain situations. But if you ignore experts, of course you are moving in the wrong direction. So people who ignore the advice of experts, they are not good leaders, and that results in big blunders and failures. Single-mindedness. कुछ leaders होते हैं they have already developed a mindset. कुछ लोग जैसे कहते हैं कि जो मैं कह देता हूं वही होता है, एक दफा जो मैंने कह दिया हमेशा वही होगा। तो what does it mean? It means that they have a single mindedness. They are not getting the input, they are not getting the feedback from others. Insensitive to others. ये वो लीडर्स हैं जिनको दूसरों की बिल्कुल परवाह नहीं है। They are not caring, and of course that damages the loyalty and motivation of employees. क्योंकि जब आप अपने एम्प्लॉइज के साथ इनसेंसिटिव होंगे तो इन रिटर्न एम्प्लॉइज भी सेम एक एटीट्यूड और बिहेवियर एम्प्लॉइज में भी डेवलप हो जाता है, और डेफिनेटली दैट डैमेजेस देयर लॉयल्टी एंड मोटिवेशन, एंड ऑफ कोर्स दैट रिजल्ट्स इन पुअर परफॉर्मेंस। बिट्रेयल ऑफ ट्रस्ट। ये वो लीडर्स हैं जो आपके ट्रस्ट को बिट्रे करते हैं। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, प्रॉमिस करके उसको ब्रेक करते हैं। जब इस तरह की सिचुएशन होगी तो डेफिनेटली दैट विल रिजल्ट इन फेलियर्स। ओवरली एम्बिशियस, अनरियलिस्टिक आप लीडर्स हैं उनके ओवरली एम्बिशियस होते हैं। वो अनरियलिस्टिक टारगेट्स दे रहे हैं अपने फॉलोअर्स को, अपने एम्प्लॉइज को, विच आर नॉट अचीवेबल, एंड ऑफ कोर्स दैट रिजल्ट्स इन फेलियर्स। ओवर मैनेजिंग, दिस इज अनदर रीजन ऑफ फेलियर, दैट जब लीडर्स अपने एम्प्लॉइज को
बहुत एक माइक्रो सुपरविजन शुरू कर देते हैं। आप सर पे जाके खड़े हो जाएं और आप हर 2 मिनट के बाद पूछ रहे हैं कि हाँ जी काम कितना हुआ, कितना हुआ, काम कितना हुआ, तो डेफिनेटली एम्प्लॉयज दे गेट डिस्करेज्ड, unable to think strategically. Of course, you need to have a broader vision. You need to have a long-term vision. You need to be a proactive person as a good leader. लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म आपकी थिंकिंग नहीं है, आपका लॉन्ग टर्म विजन नहीं है, तो डेफिनेटली दैट कैन रिजल्ट इन फेलियर्स. एंड फाइनली अनएबल टू अडॉप्ट टू सिचुएशंस. सो ये वो लीडर्स हैं जो सिचुएशन के मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर सकते नई सिचुएशन में, सो दैट रिजल्ट्स इन फेलियर्स. सो वी हैव डिस्कस दीज फैक्टर्स जिसकी वजह से जो है when grade goes bad. Now let us discuss the lifelong learning journey, how to develop your leadership skills. And the first is, of course, you need to build strong relationships with your employees and all the stakeholders and shareholders. So that is one of the most important areas we talk about. So before that, we need to lead by example, and provide recognition. You need to provide, like for example, you need to take the initiative. So first thing for a leader is that you need to take the initiative. So people who take initiative, they can develop their leadership skills. And then in building strong relationships, as I earlier told you that the real meanings of words are in the people, are in the relationships. So stronger the relations, stronger the meanings, and of course stronger the meaning, stronger the performance. Communicate effectively. So communication is a two-way street. Now leaders who communicate with their followers, they get better results than those leaders who communicate less. So having a frequent communication, a two-way communication. ये ना हो कि you are just giving guidelines and you are just telling them what to do, how to do, but you are not listening. So ideal communication is two-way communication. So you need to be extrovert as well as introvert. So how do we differentiate extrovert and introvert? Now extrovert are people who talk more, and introvert are people who listen more. So which is the best style here? As a leader, in order to develop your leadership skills, you need to have a balance of introvert and extrovert. And here I will strongly recommend that first listen and then speak. This can improve your leadership skills. Number 4 is you need to build team spirit. Encourage and reward collaboration and innovation on a regular basis. Now this is really very important. Okay, you need to provide your followers with a strong reward system. So when we talk about a strong reward system, it means that financial and non-financial rewards. So financial reward means your salaries, your bonuses, your allowances, the money you get. And non-financial rewards are, like for example, medical care, training and development, appreciation, recognition, moral encouragement. So according to research, in the long run, non-financial rewards are more important than financial rewards. So leaders who really, reward their followers according to, like for example, pay for performance. So followers who are contributing more towards the attainment of organizational objectives, they are paid accordingly. So this creates a healthy competition. So when you
develop your compensation policy, this is really very important that in your compensation policy you need to set a criteria. And this is one of the responsibilities of a good leader, that they should, make this good reward system as part of planning. And then innovation on a regular basis. So how to encourage innovation? Of course, for innovation, creativity is a must. So you need to provide a highly supportive environment to your followers. And if you do not provide that supportive, flexible, friendly environment to your followers, then how they can become more creative? In market, we have, survival of the fittest. The tight competition is going on all over the world. There are almost no more monopolies. So organizations who do the best can only survive, and organizations, who want to become the market leaders, they need to do better than others. So in order to beat your competitors, in order to become the market leader, it is really very important that you need to be creative and innovative. So by building the team spirit, these type of leaders, what they do is they promote that creativity. And as we earlier told you, that the reward system, pay for performance system gives, the satisfaction and that inner motivation to employees, that develops the discretionary behavior of employees. So employees, once they develop that discretionary behavior, they start thinking about new ways of working, and they try to unlock their real potential. And this is what a real leader can do. So then this is one of the best skills, in order to develop your leadership skills. Number 5 is set goals that are clear, specific, and measurable. I will better here say that the goals should be SMART goals. And SMART stands for specific, measurable, achievable, realistic, and time-bound. Communicate the goals to your team in ways and words that they understand. Normally ये देखा गया कि there is a wonderful vision, wonderful goals and objectives, लेकिन जब वो communicate किए जाते हैं employees को, so अक्सर cases में ये देखा गया कि employees, they are unable to clearly understand कि ये जो हमें goal बताए गए हैं इसका actually इसके meaning क्या है. So words are really very impressive, but clarity of those words is not clear. तो this is really very important कि leaders, they should communicate in most simple words. और उसका एक तरीका ये भी है कि एक ही objective को आप different angle से, different तरह से आप उसको interpret करके जब अपने followers को बताएंगे तो उनके लिए easy to understand होगा. और जितना बेहतर understanding होगी followers की अपने गोल के बारे में, उतना ही बेहतर डेफिनेटली वो परफॉर्म कर सकते हैं. और जितनी पुअर अंडरस्टैंडिंग होगी गोल के बारे में, उतनी ही उनकी परफॉर्मेंस पुअर होने के इम्कानात हैं. नंबर 6 इज अंडरस्टैंड द फाइनेंसेस, डॉक्यूमेंटिंग स्टाफ प्रोग्रेस एंड सक्सेस, looking for ways to save the company money is always a good idea. So whatever is going in and out the organization, that should be documented. अगर आप उसको डॉक्यूमेंट नहीं करेंगे तो how you are going to measure कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. So the good leaders, what they do is they create an environment जहाँ पे हर चीज को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है रेगुलर बेसिस के ऊपर कि आपकी कॉस्ट क्या है, आपके एक्सपेंसेस क्या हैं, आपकी अर्निंग्स क्या हैं, आपके प्रॉफिट्स क्या हैं. एंड देन कंपनी के पैसे को
हर मुमकिन हद तक सेव करने की कोशिश की जा रही है, एंड दिस इज वन ऑफ द गुड आइडियाज। लेकिन यहां पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि कम्युनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए जो बेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, they do that social welfare, and they invest money for the needy people in the community जिस जहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं। So this is really very important। और इसीलिए आजकल जब बात करते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो जब हम CSR की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो कंपनीज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आगे हैं, दे टेक केयर ऑफ द सोसाइटी जहाँ पे वो सर्व कर रहे हैं, तो उनकी एक मार्केट रेपुटेशन जो है बहुत स्ट्रांग होती है एज कंपेयर टू दोज कंपनीज जो कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में पुअर हैं। Number 7 is encourage the team by creating an environment in which people receive recognition for work done well, where employees are motivated to work hard for the success of the business. So encourage करने के लिए आपने क्या करना है, employees की जो work है उसको recognize करना है। Now once you praise and recognize the work of your followers, of your employees, that really, increases their motivation level. They feel really honored. उनको बहुत अच्छा फील होता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है उनकी एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज कर रही है। तो नेक्स्ट टाइम जब वो सेम एक्टिविटी करते हैं तो वो पहले से बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड in dynamic organizations, that every time an employee is performing the similar activity, employee is trying to do the best as he did in previous practice. And number 8 is help people grow their skills and strengths through education and on-the-job training programs. This is really very important, that if you do not help people grow, they will leave. So the most important, thing a good leader can do is help people grow in the organization with the help of on-the-job and even with the help of off-the-job training programs. So if there are any scholarships available for studies, for certain like training workshops, so employees can be, can be facilitated to attend and participate in different training workshops, on the job and off the job training programs, and they can even be sent for higher studies as well. So this will help your organization grow, this will help your people grow, and of course as a result this will strengthen the overall repute of your organization, and people, they love to stay with your organization. Provide quality training that will lead to confident and productive employees. Their success will often lead them to become better leaders and finally keep the dream alive. By sharing the vision of company with the team and then together putting the dream into action every single day. So I always say one thing, that we should see dreams. Dreams are really very important. But another very important thing is you need to chase your dreams. And the real ideal leaders, they help you do that. I hope that with today's lecture, you have learned about the leadership motivation, and you have learned that in development planning and administration, how ideal leaders can help the organization in order to achieve their vision, mission and objectives, at the same time aligning the individual interest and the organizational interest. Thank you very much for your kind attention. Inshallah, see you all in the next lecture. Khuda Hafiz.